ओके, मेरी आवाज आ रही है? एक्चुअली ये बीच में कट गया था, पता नहीं क्या हो गया था। तो तुम सभी अपने कैमरा ऑन करो जल्दी से आप, ताकि हम शुरू कर सकें। एक्चुअली पता नहीं इसको अचानक से कट गया कुछ। ओके, लेट अस स्टार्ट। जरा कैमरा ऑन करो जल्दी से। Hmm, 14 कैमरा ऑन। So let me share screen. This is our whiteboard. मेरी आवाज ठीक से आ रही है ना? Can you hear me? Yes, sir. Okay. Yes, sir. So let us start. ओके, कल हम ये कर रहे थे। अब यही है ना प्रॉब्लम, अधूरा रहता है तो फिर उसको थोड़ा रिपीट करना पड़ता है। We had to show that C0 is not complemented in L infinity. Of course, we know C0 is a subspace of X, नहीं L infinity। तो हमें दिखाना it's not। तो हमने इसके लिए क्या किया, हमने कहा हम हमेशा ढूंढ सकते हैं F gamma such that F gamma, let's admit, तो हमने जो अभी तक किया था, कहाँ गया ये इरेजर, हमने जो लेमा किया था उसके लिए, लेमा में हमने क्या किया था, लेमा में we showed that we can find F gamma an indexed family that is indexed by the set of real numbers, यानी जिसकी cardinality है continuum, such that F gamma is an infinite subset of natural numbers, and if gamma is not equal to gamma 2, cardinality of F gamma 1 intersection F gamma 2 is less than infinity. तो ये हमने किया था लेमा। फिर इसकी मदद से हमने किया define X gamma. X gamma is a characteristic function of chi F gamma. Of course, then X gamma is a mapping from N to R that has values 1 at F gamma belonging, okay, contained inside natural numbers, and हर जगह 0 है। इसका मतलब it has got infinitely many ones and rest are zeros. Therefore, it's a bounded sequence. So I can think of X gamma जो है, it belongs to L infinity. तो मैंने कहा था assume to the contrary. Assume to the contrary, there exists a projection, continuous bounded linear projection, P from L infinity to C naught. So then I define Q to be identity minus P. Since if I look at P as a projection, it would send C naught to C naught. That is the definition of the projection. Because of course, C naught is contained inside L infinity, it also applies. Just because P is onto and everything, and of course P is idempotent, जो हमने last time discuss किया था। तो उसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई X gamma C naught में है, then Q of X gamma is equal to 0. और ये हमने किया था। तो ये हमारा assumption था, हमने contrary assume किया। तो उसके बाद हमने क्या किया? Once I defined these sequences with the help of this collection of infinite subset of real natural numbers, then
Then I showed that, yeah, then I also created this sequence x gamma x dash gamma I. It was basically x f chi of f gamma I minus union j running from 1 to k. Then I have what j not equal to I f gamma j. So ये जो हमने किया, हाँ, before that I assumed that this cardinality of this set gamma belonging to R such that this Q ये जो है such that Q, that the modulus of Q of x gamma का nth component is greater than epsilon. इसकी जो cardinality है ये मैंने मान लिया था ये k है. Suppose इसमें elements है कितने, of course इसके elements है gamma 1 gamma 2 up to gamma k, और उनकी मदद से मैंने ये खड़ी की एक और सीक्वेंस. अब इसमें और इसमें क्या फर्क है, x डैश गामा i का जो है सपोर्ट होगा डिसजॉइंट. इसका सपोर्ट्स जो होंगे ना गामा 1 गामा 2, इसके सपोर्ट्स डिसजॉइंट होने का मतलब पता है क्या है, इसके सपोर्ट डिसजॉइंट आने का मतलब ये है कि जहां पे ये नॉन जीरो है वो डिफरेंट है फॉर डिफरेंट आईज. यानी इफ यू हैव x डैश एट गामा 1 and you have x dash at gamma 2 and x dash of gamma 3, इनका सपोर्ट डिसजॉइंट होने का मतलब है अगर मैं इनको ऐड करूं, सपोज मैं इनको ऐड करूं तो क्या होगा, you will never have, देखो अगर मैं दो, suppose you have got two sequences of ones and zeros, 1 1 1 1 0, यहाँ फिर 1 फिर 0, ठीक है ना. अगर दूसरी है इस तरह से 0 1, इसमें भी 1 zeros ही हैं, लेकिन अगर मैं इनको ऐड करता हूँ then you will get a sequence possibly of this type, then 1 then 0 then 1, यानी कहीं पे 2 भी आ सकता है, कहीं पे 3 भी आ सकता है. अपने इनको ऐड करें दो सीक्वेंसेस को तो you might get this thing. लेकिन अगर इनका सपोर्ट डिसजॉइंट है, अगर जहां पे ये वंस हैं, अगर वो सेट्स डिफरेंट है, अगर वो पोजीशंस डिफरेंट है, तब जो रिजल्टिंग सीक्वेंस होगी इट वुड आल्सो बी अ कैरेक्टरिस्टिक सॉर्ट ऑफ फंक्शन. इसके लिए वो जरूरी नहीं है अगर सपोर्ट डिसजॉइंट नहीं है, क्योंकि हमें पता है ये जो f गामा है दे कुड हैव अ फाइनाइट इंटरसेक्शन पॉसिबल. इनफिनिट नहीं होगा लेकिन पॉसिबली फाइनाइट तो. ओके, इसीलिए हमने ये कंस्ट्रक्ट की कि x डैश एट गामा जिनका सपोर्ट डिसजॉइंट हो, और उसको हमने यूज किया एक जगह. तो once I showed that, then I showed that x gamma I minus x dash gamma I belongs to C naught, which would imply that q of x gamma I, ये हमने किया था एक्चुअली, मैं सिर्फ इसका स्केच करना है ना. Now this is true for all I running from 1 to up to n, sorry k. ये हमने इसकी मदद से किया था because it was disjoint support, so it belongs to C naught. One of finite intersection, sorry, it is only finite, mean many non-zero terms, therefore it must converge to zero, जो हमने last time किया. Then फिर हमने इसकी मदद से दिखाया था कि q of summation I runs from 1 to k, signum of, जो कि मैंने बोला, it's mod x by x of that thing, q x dash at gamma I n multiplied by x dash gamma I n using the linearity and all that, this would be equal to summation I runs from 1 to n. Signum is just a scalar, it will come out, and because the nth the map, nth component of a vector under a linear map would be the nth component. नहीं, हाँ, यानी अगर मैं पहले अप्लाई करूं फिर nth कंपोनेंट निकालूं, इट वुड बी द सेम एज मैं अगर पहले nth कंपोनेंट निकालता, मतलब it would be something like signum. Let me write it here. Q x dash gamma I n. मैं क्यों रिपीट कर रहा हूँ यार, जरूरत ही नहीं पड़ती अगर मैंने कल
ओके मतलब ये तुम कर सकते हो, दिस इज स्ट्रेट फॉरवर्ड। लेकिन उसके बाद चूंकि ये होगा सिग्नम ऑफ समथिंग इनटू दैट नंबर इज जस्ट द मॉडुलस, सो इट वुड बी समेशन आई रन्स फ्रॉम 1 to k q ऑफ x डैश गामा आई n जो है। ओके बट चूंकि गामा डैश आई चूंकि ये वेक्टर सेम है तो इनके nth कंपोनेंट्स भी सेम होंगे, वही तो मतलब है। तो दैट मीन्स समेशन आई रन्स फ्रॉम 1 to k q of x gamma I का nth component and which by our assumption would be greater than or equal to k epsilon. Okay, on the other hand, अब ये है important, summation I runs from, ये मैं actually तुम्हें बताना चाहता था, सिग्नम वो जो हमने बनाई ना, वो क्या बोलते हैं x डैश वाली सीक्वेंस, वो इस वजह से लेके लिए बताई कि x डैश गामा I n, ये जो ये वाली सीक्वेंस है x गामा I infinity is less than equal to 1। उसकी वजह ये जो, क्योंकि मैं वेक्टर्स को ऐड कर रहा हूँ, मल्टीप्लाइंग बाय नंबर by basically what you call it plus minus 1, so signum of anything is actually x by norm x, so it obviously it can be x by mod x, कोई भी number हो, so it can be either plus minus 1 or 0 in case x is equal to 0। तो चूंकि ये plus minus 1 है, ये जो ये नंबर, और मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ x डैश गामा आई को, विच आर 1 and 0, यानी ये कहीं पे होगा +1 -1। अब मैं और भी इसी तरह की ऐड कर रहा हूँ, है ना। अब जब मैं इनको ऐड करूंगा, क्योंकि ये x डैश गामा आई इनका सपोर्ट जहां पे ये नॉन जीरो है वो डिसजॉइंट है उससे, तो यू विल गेट समवेयर एल्स +1 -1, अल्टीमेटली यू विल हैव दिस एज अ सम, एक वेक्टर है, एक सीक्वेंस है जिसमें वंस या प्लस माइनस वन है, टू या टू नहीं है, कहीं पे वन है या -1 है या 0। तो फिर जब उनका सुप्रीमम लेंगे तो वो 1 ही आएगा, यानी इसका नॉर्म जो होगा वो लेस देन इक्वल टू 1 होगा। सपोज हर जगह 0 है तो फिर तो पता ही। ओके, तो दिस इज बिकॉज x डैश i's हैव डिसजॉइंट सपोर्ट। देखो इससे कितना टाइम हमें गया। Once I am done that, then I can show that q epsilon जो है, जो कि लेस देन इक्वल टू है what q of मॉड्यूलस ऑफ, जो भी है क्योंकि पॉजिटिव है, q of समेशन जो ना यहाँ पे है, ये हम यूज कर रहे हैं, यहाँ पे जो है q of summation I runs from 1 to k signum of q x dash gamma I का nth component multiplied by x dash at gamma I, and then taking the nth component of the range modulus. So this would be less than equal to, because it's a linear map, जैसे कि तुम्हें पता है, norm of q into whatever जो भी है into summation da da da, जो भी यहाँ पे है, जो ना यहाँ ये वेक्टर है, लेकिन चूंकि मैं इसको रिप्लेस कर सकता हूँ बाय जो भी है whatever it is, मतलब चूंकि लेस देन इक्वल टू 1 है अल्टीमेटली, this is less than equal to 1, so this is less than equal to q, so we finally get that k जो उसकी कार्डिनैलिटी है less than q by epsilon था, whatever, हाँ q by, sorry, norm of q by epsilon। So once we have done that कि इसकी cardinality infinite है, which implies that cardinality जो ना मेरी claim थी, तो मैं लिखता हूँ that proves my claim, that proves the claim। claim क्या था? claim ये था कि cardinality of this set, cardinality gamma belonging to R such that q gamma x gamma, sorry, q of this sequence जो हमने खड़ी की थी using the sets gamma f gamma, sorry, is greater than equal to epsilon is less than infinity. So we have proven that. So अगर मैं अब इनका now for each n, मतलब nth component किस का greater than epsilon है, अगर मैं सभी n's को लूं taking all possible n's, यानी ये है gamma such that say
Q gamma of 1 is positive, 2 is positive, 3 मतलब n है, n could be 1 2 3 and natural numbers है, उसके n मतलब infinite components हैं. So मैंने कहा था let a अगर हम फिर माने this thing all gamma belonging to R such that Q of x gamma का जो nth component है वो 0 नहीं है. अगर 0 नहीं है तभी उसका मॉडुलस ग्रेटर देन इक्वल टू एप्सिलॉन है. तो it is actually the countable union of sets of this type which are finite. So therefore A is countable. तो यहाँ तक मुझे लगता है पहुंच गए हैं. Implies अगर ये countable है, now A is a subset of real numbers that is countable. What does that mean? Then there exists gamma belonging to R minus A. क्योंकि ये काउंटेबल नहीं है तो हमें यहाँ से कुछ बचेगा बिकॉज अनकाउंटेबल सेट. अगर मैं काउंटेबल सेट से अनकाउंटेबल सेट को बाहर निकालूंगा वहां तो अभी बहुत कुछ है. तो आई कैन फाइंड अ गामा देयर फॉर विच Q ऑफ गामा का जो nth Q ऑफ x गामा का जो nth कंपोनेंट है वो 0 होगा फॉर ऑल n. यहाँ बोल रहे हैं कोई कंपोनेंट 0 नहीं है. यहाँ मतलब वो सेट तो काउंटेबल है R में. तो फिर तुम ऐसी भी एक सीक्वेंस ढूंढ सकते हो जिसकी रेंज में जब हम Q उसको अप्लाई करें उसके सारे के सारे कंपोनेंट 0. I hope this is clear for all n belonging to the set of natural numbers. थोड़ा सा कॉन्वोल्यूटेड है. अगर सारे के सारे 0 है तो वो वेक्टर ही 0 होगा. Q of x gamma is equal to 0. अगर वो 0 है then it means that of course it must belong to, it means that x guy चूंकि ये प्रोजेक्शन है onto C naught, it must belong to C naught, which is a contradiction, which is a contradiction, which is a contradiction. Why? Because x gamma is the characteristic function of an infinite subset of natural numbers. Infinite subset of natural numbers की characteristic function है. So ये जो x gamma है, it should have infinitely many ones. So if it has infinitely many ones, so it can either converge to 1 or not converge at all. तो 0 को converge करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि इसमें वही sequences हैं जो, तो this is a contradiction. This cannot belong here because this is characteristic function of an infinite subset of natural numbers. So I think that finishes that C0 is not complemented. मैंने इसको जानबूझ के फिर से थोड़ा सा दोहराया. मैं चाहता हूँ तुम इसको दोहराओ क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्ट है, कंस्ट्रक्शन है इसमें काफी ज्यादा. Now we come to Dix-Meyer's theorem. It's again regarding this complement. लेकिन इसके लिए again हमें थोड़ा सा रिवाइज करना पड़ेगा. जो मैं बार-बार कह रहा हूँ. So if x is a normal linear space, then I can define g of x to this double dual by g of x. वो वाला फंक्शनल है, यानी g of x कहाँ बिलोंग करना चाहिए? x double star में. So g of x is that double star which when applied to x star becomes x star at x. And of course this is a scalar, right? And I'm applying to it x. What is g of x? G of x मेरे कहने का मतलब है is map from x star to k, और चूंकि x star linear है, so therefore this should be linear and continuous. So g of x जो है it belongs to x double star when defined like. Not only that, you can easily show that actually हमने किया होगा, तुमने किया, is equal to norm of x and g of x is 1 to 1. इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब g of x जो है it is a subspace. And x is isometric. It means it's an embedding. And x is isometrically isomorphic to its image inside x double star. So I can regard this as, इसको बोलते हैं canonical embedding.
canonical method. So it is linear, continuous, etc., etc. जो भी तुम कहना चाहो, it preserves everything. It's linear. It preserves the norm and it's one-to-one. On-to हो तो then if J is on-to, अगर J on-to भी है, then we say X is reflexive. On का मतलब क्या है? On का मतलब G of X is the same thing as X double star. इसका मतलब then X is isometrically isomorphic to X double star, or we simply write X is equal to X star, X double star. Oh no. जैसे सबसे बड़ी example है L2. L2 is reflexive. Actually, every Hilbert space is reflexive. L2 is a Hilbert space. Anyway, तो ये तो हो गया इसका थोड़ा रिमाइंड, आई होप. और कभी कभी हम इसको ऐसे लिखते हैं, जो मैंने यहाँ डायरेक्ट लिखा, हम लिखते हैं J of X is equal to X double star, where X double star acts on X star via this map is equal to, एक ही बात. मैंने इसको डायरेक्ट यहाँ सब्स्टिट्यूट किया. तो ये हर एक नॉर्मल लीनियर स्पेस के लिए है. तो it can also be applied to X star. So I can define another canonical mapping, right, to X triple star. अब यहाँ पे क्या होगा? Then you will get J1 at X star applied to X double star would be equal to, can you guess? अरे यही है ना, यहाँ जो फॉर्मूला है उसको एक एक स्टार बढ़ा देना. अभी यहाँ एक एक स्टार बढ़ गया. We can define it for any normal linear space. So X star is also a normal linear space with जो इसका नॉर्म है अपना. तो उस हिसाब से तुम किसी भी नॉर्मल लीनियर स्पेस पे कर सकते हो, तो X स्टार पे भी कर सकते हो, X डबल स्टार से भी कर सकते हो. और मैं एक और चीज जस्ट टू मेक यू लिटिल मोर उसको रिवाइज कर रहा हूं मैं, वो ये व्हाट वी कॉल if T belongs to a bounded linear operator from X to Y and your X and Y are say normal linear spaces, what do that mean? What do I mean by that? That means T is linear, मुझे बताना पड़ेगा, and T is continuous. यानी cos T is a map from X to Y. मतलब इसका मतलब ये है अगर T BXY में है, bounded linear operators, and there exists some K positive such that norm of T of X यानी continuous भी है और linear भी है. So that's BXY. So then I can define, ये हमने किया है first में function analysis. Do you remember conjugate of T? Anybody? जिसको हम T star से denote करते हैं, जल्दी से. Anybody? सो गए? बेचारे क्या करें, सो गए. Anybody home? या से तुम टोपी लगा के सो गए? कोई नहीं जाग रहा. हेलो, चलो जागो ही नहीं, थोड़ा ध्यान भी दो. मैंने पूछा ना क्या तुम्हें पता है कॉन्जुगेट के बारे में, तो कुछ याद आया? कॉन्जुगेट ऑफ ए बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर, कुछ आया याद फ्रॉम फंक्शन एनालिसिस 1? मैं यहाँ है ना, तुम देखो ना बोर्ड पे, मैंने कहा फॉर एवरी टी वी कैन डिफाइन ए कॉन्जुगेट. फॉर एवरी बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर belonging to BXY, we can define a bound T star belonging to BY star X star. मतलब ये है, और उसकी एक डेफिनेशन है. तुम्हें याद है कुछ? अरे यस और नो बोलो. नहीं याद है, हमने नहीं पढ़ा, कुछ बताओ. हेलो. नो सर, याद नहीं है. गुड. तो अभी तुम याद कर लो. So I've got T is a map from X to Y that is linear. So I define for this T, for T belonging to BXY, I define T star from Y star to X star by, ऐसे हम करते हैं, T star कैसे करते हैं अब तो मैं भी भूल गया. ओके,
T star at, I should have something here, y star में T star at f लिखता हूँ is equal to f composition T, ऐसे. This is the definition. So पहले हमें देखना है क्या f composition T है ऐसा मैप, है ना? So हाँ पहले मैं लिख देता हूँ ये f कहाँ belongs to, f belongs to y star. So you have to remember what? You have to remember. Now what I am saying T star f जो है, अगर मैं इसको इस तरह से करूंगा तो पहले तो ये है कि it should belong to the codomain, यानी it should belong to x star. Belonging to x star means, what does it mean? It must be a map. इसका मतलब it must be a map from x to k. X to k, that's linear and continuous. यानी ये जो f composition T है, it must be a map from x to k. Let us see. Now x यहाँ पे है, then I have y. T is a map from x to y. वही तो कह रहा है, linear and continuous. And of course f जो है, f belongs to y star. So f is a map from, जल्दी बताओ ना, f is a map from y to k. तो f goes from y to k. इसका जो composition है वो है f after t. This goes from x to k. So this is a map from x to k. It is a composition of two linear maps. Therefore it's linear, and it's a composition of two continuous maps. Therefore it's a continuous map, right? So इसका मतलब it's a boundary linear map from x to k. It means f composition T belongs to x star. So indeed, this is a well-defined map because this does belong to x star whenever f belongs to y star. So this is the definition. Or we sometimes write it as T star of y star, क्योंकि y star के अंदर है, is equal to y star composition T. मतलब ये भी इसकी एक शक्ल है, लेकिन ज्यादा मैं ही यूज करूँ, क्योंकि of course f y star में है तो y star के elements को small y star से represent करते हैं. But I would advise you to revise it from वो 6th semester में जहाँ तुमने पढ़ा है. अब ये सारा background करने के बाद what did we know? We knew about this canonical embedding and conjugate. तो इसकी मदद से हम प्रूव करेंगे Dix-Mears theorem. Dix-Mears theorem. Dix-Mears theorem कहते हैं, बड़ा important, कि x star given a normal linear space S, चलो मैं लिख देता हूँ, given a normal linear space, given a normal linear space X, x star is always complemented in x triple star. Because x star can be seen, because x can be seen as a subspace of x double star. Similarly, x star can be seen as a subspace of x triple star. So what we are saying, you can always define a projection P from x triple star to x star that's linear, continuous, and idempotent, and on. We can always do that because I can think of it as a subspace via the canonical map, जो हमने पहले डिस्कस किया था. ठीक है? Okay. चलो मैं लिख देता हूँ more specifically to be more precise, although I don't need to be, क्योंकि वो clear है. If J1 is a canonical map from x star to x triple star, is the canonical embedding जो मैंने अभी डिस्कस किया था, then J of x star, J1 of x star, which is isometrically isomorphic to x star, is always complemented in x triple star. Okay, जो हमने इसको अभी किया, now it should be easy क्योंकि हमने थोड़ा इसका background workout कर लिया. So let's do the proof.
Okay, let J from X to X double star and J1 from X star to X triple star be the canonical embeddings. Canonical embeddings, जो कि मैंने अभी डिस्कस किया है वो क्या होती है, यानी by this we mean Jx applied to X star is equal to X star at X, and J1 applied to X star then applied to X double star is equal to X double star at X star. So this is the meaning. मीनिंग और भी है जो मैं इससे पहले बता चुका। अगर ये कैनोनिकल एम्बेडिंग्स हैं, we claim that J star composition J1 where J star is the conjugate of J is identity on X star. मैं ये claim कर रहा हूँ this is मतलब with this when applied to X star is identity. तो J star is the conjugate of J. तो मैंने क्या किया था, मैंने अभी कहा था if T is a map bounded linear map from X to Y, then we can define a bounded linear map Y from Y star to X star, जिसको हम कहते हैं conjugate of T. So let's see ये row number 20 क्या हरकतें कर रहा है, क्या बात है, हेलो हेलो, बोर हो गए, थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन, कोई बात नहीं है अभी सबको. Okay, so now what I'm trying to say, J is a map from X to X double star. इसका conjugate क्या होगा? Conjugate of J star would be a map from X triple star to X star. ठीक है? Now I want to see this composition कहाँ है? Now J1 is a map. Now let me say J1 is a map from X star to X triple star. So what do I? J is a map. J star is a map from X triple star to X star. क्योंकि एक X star बढ़ जाता है. So therefore J star after J1 after J star, तो it means अगर मैं चाहता हूँ X triple star से X star में that goes to X triple star, पहले मैं अप्लाई कर रहा हूँ J star की J1, J कर रहा हूँ, नहीं J1 ही करते हैं, ये गलत हो गया यहाँ पे थोड़ा सा. Okay, I can have X star, then I have X triple star, then I go to X star. This map is J1, and after that I apply J. So I am going from, this is my J, of course J star composition J1. So this is a map from X star to X star. So indeed it's a map from X star to X star. तो पहली बात इससे इसके आइडेंटिटी होने के चांसेस तो है ना, because it should be a map from the set to itself. तो अब दिखाना है आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी के लिए क्या दिखाना है, यानी तो आइडेंटिटी के लिए बेसिकली मुझे दिखाना है J star composition J1 of X star is equal to X star for all X star belonging to capital X star. तो ये होगा ना इसका आइडेंटिटी, बट ये होल थिंग जो है it belongs to X star, है ना, because this is a map from X star to X star, so this whole thing belongs to X star. So how do you know something here? Because this is a collection of mappings. So a mapping is known by its action. तो हम इसका एक्शन देखेंगे ये कैसा करता है, उसी से हम देखेंगे अगर दोनों का एक्शन सेम है इस फंक्शन का और इस फंक्शन का, for all X star then they must be same and this must be an identity. Okay, let's see, अब ज़्यादा मुश्किल नहीं है, once we sorted this out. J star J1 of X star का जो action है, it would be on X, so applied to X. This would be equal to J star applied to J1 applied to X star applied to X. Well, this is what we mean by this. Of course, you have composition लिख रहे हैं. So once that is done, now use the definition of the conjugate. So this would be J1 applied to X star
applied to j of x, because what now definition ये होनी चाहिए j star at f is equal to f composition j, मतलब जो हमने define किया था पहले conjugate को, ये है उसकी definition for all f belonging to x triple star. Now j1 of x जो है वो indeed belong करता है x triple star में. So it means that j star of j1 of x star, right, is the same as j1 x star applied to j. तो इसको हमने यूज किया, तो दिस इज j1 x star applied to j. ऑफ कोर्स यहाँ x है ही जो जिस पे हम इस फंक्शन को काम करा रहे हैं. So what would be that? That would be j1 of x star applied to x double star. हाँ, यहाँ मैं लिखूंगा जो कि मैं लिखता रहा हूँ, x double star is defined as x double star at x star is equal to x star at x. तो ये इधर आएगा. Okay, now this is j1 of x star applied to x double star. Now then I can write j1 of x star as x triple star applied to x double star. But this is equal to x double star at x star. बाय डेफिनेशन, क्योंकि जब मैं j1 ऑफ x स्टार को x ट्रिपल स्टार से उसका मतलब ये होता है, लेकिन मैंने तो पहले ही कहा x डबल स्टार इज x स्टार एट x. गुड, दिस इज ट्रू फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू x. तो दोनों का एक्शन सेम है, तो इट इंप्लाइज एंड हेंस j स्टार कंपोजिशन j1 ऑफ x स्टार is equal to x star for all x star belonging to x star, means that j star j1 is identity on x star on the subspace जिस पे act करता है. Once I am done that, okay, let's do the further. Hence I can write j1 j star का square. By that I mean j1 j star composition j1, ये भी composition ही है बेसिकली, इस तरह से. चलो ऐसे मैं करता हूँ. Since composition is associative, that would be j composition j star composition j1 composition j star, sorry यहाँ पे j1 है, और चूंकि ये आइडेंटिटी है हम प्रूव कर चुके हैं, so this is just j1 composition j star. So therefore j1 composition j star, अब देखते हैं ये मैपिंग कहाँ से कहाँ तक जा रही है, is a projection, is idempotent, is a projection, क्योंकि बाकी प्रॉपर्टी तो इसकी है ही. Now you have to remember that projection from x triple star to j of x1, नहीं j1 of x star. चलो मैं यहाँ लिख रहा हूँ j1 x star है यहाँ पे. Since j star is onto, it follows that जो composition है वो भी onto होगा. It follows that j1 of j star applied to x triple star is equal to j1 of x star. I hope that's clear, which implies that j1 x star is complemented. अब चूंकि खत्म हो रहा है, मैं इसको थोड़ा सा बाद में, नहीं वैसे जरूरत नहीं है, अगर तुम्हें कुछ समझना है तो मुझे बता देना, क्योंकि दिखा रहा है less than 1 minute. Sort this out, इसको थोड़ा तुम अपने तौर वर्कआउट कर लो, ज्यादा कुछ नहीं है. तुम्हें पता है कॉम्पोजिशन की प्रॉपर्टीज, और ये भी पता है कॉम्पोजिशन में जो बाद में वाली फंक्शन है, अगर वो वांट टू हो तो कॉम्पोजिशन